ICSE Mathematics Class 10th, Chapter 15, Exercise Self-Evaluation and Revision. Question number 1. The figure alongside shows the cross-section of an ice cream cone consisting of cones surmounted by a hemisphere. The radius of the hemisphere is 3.5 centimeter and the height of the cone is 10.5 centimeter. The outer shell A, B, C, D, E, F is shaded and not filled with ice cream. AE is equal to DC, that is equal to 0.5 centimeter. AB is parallel to EF and BC is parallel to FD. Calculate first the volume of the ice cream in the cone in bracket unshaded portion including the hemisphere in centimeter cube. Second part, the volume of the outer shell, the shaded portion in cube centimeter. Give your answer correct to the nearest cubic centimeter. अभी यहाँ पर देखिए एक आइसक्रीम का है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, पोर्शन दिया हुआ है. ये वाला पोर्शन जो है हेमिस्फेरिकल है, ये कोनिकल पार्ट है. इसमें दिया हुआ है AE इज इक्वल टू DC एंड इट इज इक्वल टू 0.5. AE is equal to DC, that is 0.5 centimeter. AB is parallel to EF, AB is parallel to EF and BC is parallel to FD. Now in triangle ABC, there are two triangles ABC and triangle EFD. In triangle ABC, the angle A is equal to angle E. And angle C is equal to angle D because corresponding angles are equal, because the lines are parallel, so there are corresponding angles which are equal. Once the two angles of one triangle is equal to the two angles of the other triangle, then the triangles are similar. Means the triangle ABC is similar to the triangle EFD. Hence AC by ED, AC by ED is equal to BN by FN. This implies that 7 upon, देखिए AC क्या है, 7 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 है. 7 upon, अब यहाँ से 0.5 दोनों तरफ से माइनस कर दीजिए. 7 minus 0.5 is equal to 10 upon 10.5 upon Fn, means total height divided by Fn, means this height. So Fn is unknown. So 10.5. So Fn will be equal to 10.5 into 6. 6 कहाँ से आया है देखिए, 7 में से ये माइनस करने पर 6 आ जाएगा. So 10.5 into 6 divided by 7. तो 1.5 इसको डिवाइड कीजिए. 15 7 जब 105 होता है, ये पॉइंट लगा दिया मैंने 1.5 into 6. तो 1.5 into 6 is equal to 9 centimeter. So Fn will be equal to, Fn means height of the inner part of the conical. आउटर पार्ट का जो हाइट दिया हुआ है तो 10.5 दिया हुआ है ऑलरेडी. तो वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम will be equal to 2 by 3 into 22 by 7 into 3.5 raised to power 3. So it is a hemispherical volume, plus 1 by 3 plus 22 by 7 into 3 square. इसका रेडियस देखिए 3 है, इनर पार्ट 3 स्क्वायर इंटू 9. सॉल्व किया, 22 by 21, take it out common, and 2 into 42.875 plus देखिए 9 into 9 81. So 22 by 21 into 166.75, it will be equal to 366.
36 sorry 3668.5 होल डिवाइडेड बाई 21 डिवाइडेड की करने पर 174.69 that will be equal to 174.69. So approximately it is 175 cubic centimeter. Now the second part, the volume of the shaded portion will be equal to, देखिए इसका बाहर वाला है ए बी सी माइनस ई एफ डी. वॉल्यूम ऑफ द शेडेड पोर्शन विल बी इक्वल टू, कोनिकल पार्ट का लेंगे हम 22/21 इंटू 3.5 होल स्क्वायर इंटू 10.5 माइनस 3 स्क्वायर इंटू 9, क्योंकि कोन का जो वॉल्यूम होता है किसके बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. So 1/3, 3 has been multiplied to the 7, so it will 21. So 22/21 is common. So 3.5 का whole square into 10.5, that is height, minus inner radius, that is 3 square into 9 Fn. 22/21 इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 128.625 माइनस 81. फर्दर सॉल्व किया तो 22/21 इंटू 47.625, दैट विल बी इक्वल टू 15.875. सॉल्व किया, इसे डिवाइड किया तो हमने 3 से. So now multiply it, 22 into 15.875, you will get 349.25 divided by 7. Ultimately you will get 49.89. So 49.89, it is just approaching to 50 cubic centimeter. Hence it will be the answer of this. Question number 2, first part. The surface area of the solid metallic sphere is 1256 square centimeter. It is melted and recast into the solid right circular cone of radius 2.5 centimeter and height 8 centimeter. Calculate the radius of the solid sphere. अब देखिए surface area of the solid metallic sphere is given, that is 1256 square centimeter, and it will be equal to 4 pi r square. So we have to find out the r radius. So r square will be equal to 1256 into 7 upon 4 into 22. 4 से हमने डिवाइड किया इसको. Now again 314 multiplied by 7, we got it 2198 by 22. Again you solve it by 2, divide करो इसको 2 से, you will get 1099 by 11. सॉल्व किया 99.9090, it is just approaching to 100. 99.9090, it is just approaching to 100. So the square root, taking the square root of 100, so radius will be equal to 10 centimeter. This will be the answer. Number of cones recast. अब देखिए, अब इसका है जो नंबर ऑफ कोन्स रिकास्ट करेंगे तो कितना हो मिलेगा. सो 4/3 22/7 इंटू 10. अब इसी स्फीयर को रिकास्ट किया जा रहा है किसमें, कोन के लिए. सो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 10 क्यूब मीन्स 4/3 पाई आर क्यूब. दैट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. अब कोन का वॉल्यूम कैसे निकलता है, 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, दैट इज 2.5 स्क्वायर. इट इज ऑलरेडी गिवन and height is also given, that is 8. देखिए 3 and 3 से कैंसिल हो गया, 22/7 22/7 से कैंसिल हो गया, 8 है यहाँ पर या 4 2 जा 8. सो 2.5 का स्क्वायर किया, 2.5 का स्क्वायर किया तो कितना आएगा हमारा 625.
6.25 मल्टीप्लाई किया 2 से तो वी गॉट इट 12.5. Now in order to remove that one decimal, I have multiplied the numerator by 10. So 1000 here from 10 raised to power 3, that is 1000 into 10, that will be equal to 125. Divide किया इसको, we solve it, you will get 80. That will be the number of cone recast. Now come to the question number 3. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, in an exhibition tent is in the form of a cylinder surmounted by a cone. The height of the tent above the ground is 85 meter and the height of the cylindrical part is 50 meter. If the diameter of the base is 168 meter, find the quantity of canvas required to make the tent. Allow 20% extra for folds and stitching. Give your answer to the nearest square meter. अब देखिए यहाँ पर एक टेंट है जो एग्जीबिशन के लिए है. इसका लोअर पार्ट है सिलिंड्रिकल पार्ट में है, अपर पार्ट जो है कोनिकल पार्ट में है. टोटल हाइट जो दिया हुआ है फ्रॉम द ग्राउंड इट इज़ 85 मीटर. सिलिंड्रिकल पार्ट का हाइट है 50 मीटर्स. देयरफॉर द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट विल बी 35 मीटर. अब ये यहाँ पर डायामीटर दिया हुआ है 168 मीटर. इसका हाफ कीजिए जो 84 मीटर इसका रेडियस आ जाएगा. सो इट विल बी ऑल्सो 84. सो नाउ यू कैन फाइंड आउट द स्लांट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट. L will be equal to 35 square plus 84 square. You will get 1225 plus 7056. इसको सम किया तो 8281 का स्क्वायर रूट लिया 91 आया. Now the total canvas in the tent will be required. This is the 22 by 7 into 168 into 50 means pi dh. Pi dh. Pi d means circumference. Circumference into height. So the pi dh plus 22 by 7 into pi rl, that is 84 into L is 91. Slant height 91 निकाला हमने. So 22 by 7 and 84 common ले लिया यहाँ से. Here it will be 2 will be left. So 2 multiplied by 50, it will be 100. Here 91, so 191 will come. So 22 by 7 into 84 into 191. Multiply किया, we got 50,444 canvas. But there it is mentioned that the canvas required for folding and stitching along with the tent. So total canvas required will be 50,424. In the bracket I have written 1 plus 20 by 100. That is 1 by 5. 5 on the 5 plus 1, 6. So 50,000 into 424 into 6 by 5. It will be equal to 30,000. 3 lakhs 2,544 divided by 5, it will be equal to 60,508.80 and it will be, देखिए 60,508 है तो 6,509 हो जाएगा. क्यों? 8.80 है. That will be taken as a nearest square meter. So 60,509 square meter. It will be the total canvas required, including your stitching, folding, etc. Now question number 4. A hollow sphere of internal and external diameter
is 4 centimeter and 8 centimeter respectively is melted into a cone of the base diameter 8 centimeter. Find the height of the cone. देखिए स्फीयर है जिसका एक्सटर्नल डायमीटर है 8 सेंटीमीटर, सो एक्सटर्नल रेडियस 4 सेंटीमीटर हो जाएगा. इंटरनल डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, सो इंटरनल रेडियस विल बी 2 सेंटीमीटर. इट इज melted into a cone, so the diameter of the cone is given, that is 8 centimeter, so the radius will be 4 centimeter. We have to find the height of the cone. Now see, on one side 1 by 3 pi r L, pi r square h, 1 by 3 pi r square h, that will be the volume of the cone. So 1 by 3 into 22 by 7 into 4 square into height, that should be equal to 4 by 3 into 22 by 7 external radius का cube minus internal radius का cube, that is 4 cube minus 2 cube. So 4 cube, that is 64, minus 8, that will be equal to 56. 56 divided by 4. You see the 3 and 3 cancel, 22 by 7, 22 by 7. Here 4 का स्क्वायर कैंसिल किया, इधर से 4 कैंसिल कर दिया. Now 4 will be left here. So 56 divided by 4, that will be equal to 14 centimeter. The height of the cone will be 14 centimeter. Now come to the question number 5. A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 11 centimeter and the radius of its top, which is open, is 2.5 centimeter. It is filled with the water up to the rim. When the lead shot, each of which is a sphere of radius 0.25 centimeter, are dropped into the vessel, so 2 by 5 of the water flows out. Find the number of the lead shot dropped in the vessel. अब देखिए एक कोन है जो कि इन्वर्टेड है, जिसका बेस ऊपर है और इसमें पानी भरा हुआ पूरा किनारे तक. जैसे ही हम इसमें लेड शॉट डालेंगे तो 2 by 5 मीन्स 2/5 पार्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर विल फ्लोज आउट. वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ द लेड शॉट. इसका टोटल हाइट 11 सेंटीमीटर है, रेडियस 2.5 सेंटीमीटर है और लेड शॉट डालने पर जिस लेड शॉट का रेडियस कितना है 0.25 सेंटीमीटर. सो द नाउ number of the lead shot will be equal to 2 by 5 into 1 by 3 into pi 22 by 7 into radius, means 1 by 3 pi r square h. So 2.5 square किया into 11 height, whole divided by volume of the lead shot. देखिए 4 by 3 into 22 by 7 into 0.25 का क्यूब. अब देखिए यहाँ पर डेसिमल के 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है 2 and 5, इसका क्यूब करना है. सो हमने क्या किया, यहाँ पर 1 के साथ में कितने जीरो लगाया, 2 2 4 6 जीरो लिख दिया और यहाँ से डेसिमल हटा दिया हमने 6.25. इसके 2 जीरो को कैंसिल किया, इसका भी डेसिमल हटा दिया. तो 1 by 5 into 625 by 2, 11 and 10 raised to power 6 whole divided by 15,625. सॉल्व किया इसको, we got 11 into 40, that is 440 number of lead shots have been dropped, on account of which 2 by 5 part of the water of the cone will flows out.